ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनकोडर। एनकोडर को आप मल्टीप्लेक्सर से याद रख सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स थे एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट वी आर गेटिंग द सिंगल आउटपुट। ओके, और उन आउटपुट पे उन बहुत सारे इनपुट में से एक इनपुट आ रहा था। कौन सा इनपुट आएगा वो कौन डिसाइड करता था? सिलेक्ट लाइन। इन केस ऑफ एनकोडर वी डू नॉट हैव एनी सिलेक्ट लाइन, वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट। बट फॉर्मेट जो है वो आप मल्टीप्लेक्सर से याद रख सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर का जो फॉर्मेट होता है दैट इज बेसिकली स्टार्टिंग विद द ब्लॉक डायग्राम इज वी हैव 2 raised to power n into n, okay, where this 2 raised to power n is basically representing your inputs और n जो है वो आपके क्या होंगे? आउटपुट। ओके, सो दिस इज एक्चुअली मैनी टू मैनी सर्किट। ऑब्वियसली यहाँ पर आपके जो आउटपुट हैं वो कम है एज कंपेयर टू इनपुट। ओके, सो मल्टीप्लेक्सर में क्या था आपका? 2 raised to power n into 1, but in case of your encoder we have 2 raised to power n inputs हैं और n outputs हैं। ये इसका फॉर्मेट है। ओके, so the thing is encoder they are basically used to encode your data. Encoding means they the output is basically going to be in the binary format. जो आपका आउटपुट होगा वो बाइनरी फॉर्मेट में होगा। ओके, सो आपके जो एनकोडर हैं, encoder gives binary output. Okay, so in order to understand encoder or how encoder works, एक example लेते हैं। Let's say we have example is like if I have to make octal to binary converter. Okay, so octal means we know that 8 आउटपुट होने वाली है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें 8 इनपुट होने वाले हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वी आर गोइंग टू गेट 3 आउटपुट्स। सो दैट इज एक्चुअली 8 into 3 which is 2 raised to power n, which is nothing but 2 raised to power 3, which is representing my number of inputs, and this 3 which is n that is basically representing what? आउटपुट्स जो किस फॉर्मेट में होंगी? बाइनरी फॉर्मेट में। ये तो बताया एनकोडर आपका बाइनरी आउटपुट देने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 8 आउटपुट्स इनपुट स्टार्टिंग विद I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. Corresponding to that we have 3 outputs Y0, Y1, Y2. Okay, so let's say now अब आपका I0 पे बना है, let's say I0 पे बना है, बाकी सारे इनपुट पे कुछ नहीं है। okay, so the binary output comes out to be 000. this is the input at I0, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका बाइनरी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ दैट इज 000। ऐसे समझिए ये जो 0 है ये वो डेसिमल वैल्यू है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें बाइनरी आउटपुट मिल रहा है 000। ओके, देन लेट्स से our input is I1, rest of them are 0, तब बाइनरी आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंग प्रोड्यूस हुआ 001। ओके, नेक्स्ट I2, then we have 010। मैं जस्ट इस डेसिमल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आई एम गिविंग यू द आउटपुट। ओके, देन वी हैव I3, so this is 011। then we have I4, I'll get 100। then I have I5, this is 101, and then we have I6, that is 110, and the last one is I7, we have 111। okay, so corresponding to these inputs जिन जिन values पे 1 आए हैं, providing the condition rest of the inputs are 0। okay, so this is the corresponding outputs, binary outputs I am getting. That's why we use encoder to convert your analog data into a digital form. It is encoding it, encoding into what? Binary। okay, so now in order to implement it, what I need, the second step, that is the boolean expressions। so corresponding to y0 हमारा boolean expression क्या आएगा guys? y0। देखिए किन किन वैल्यूज पे बना है, स्टार्टिंग विद I4, सिंपल y0 पे फोकस करिए। ओके, सो I4,
then we have plus I5, then I6 plus I7. This is my Y0. Then Y1, one देखिए, we have 1 at I1, then plus I3, then we have I5, and then I7. Okay, sorry, this is nothing but my Y2. What about Y1? ये Y2 लिख दिया guys मैंने पहले. Okay, so next we have Y1 starting with what? I2 plus अगला वैल्यू किस पे पड़ा है 1, that is I3, then we have I6 plus I7. तो जिन जिन वैल्यूज पे 1 पड़े हुए थे मैंने जस्ट उन इनपुट्स को आपस में ऐड कर दिया है. दैट विल प्रोड्यूस माय पर्टिकुलर आउटपुट. ये ध्यान रखिएगा, पहले मैंने Y2 लिख दिया, उसके बाद Y1 लिखा है. ओके, कंफ्यूज मत हो जाइएगा इसमें. ओके, सो द लास्ट स्टेप इज implementation, where I have to make the circuit diagram for this, and it's very simple. So starting with Y0, in order to implement this I need simple OR gate. So this is I4, I5, I6, I7. This will give you what? Y0. Then Y1, Y1 ये वाला है, ये जो बाद में लिख दिया है, starting with I2, then we have I3, then we have I6, and the last one is I7. This will produce what? Y1, and the last one is Y2. This is what? I1, I3, I5, I7. This is nothing but what? Y2. So this is the implementation of my encoder. Okay, thank you guys.